सामने स्क्रीन पर वो 323 पर आ चुका है। टारगेट आपका पहला वाला 500 और 650 के आसपास का रहेगा। निफ्टी बैंक में बड़े कन्विक्शन के साथ तेजी का ट्रेड और निफ्टी बैंक इस समय करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, तो डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इसमें नजर आई जरूर है। चलिए फोकस करते हैं एक और सेक्टर पर जिसमें सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है, वो है केमिकल स्टॉक्स। पूरा केमिकल पैक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। टाटा केमिकल्स नतीजे अच्छे थे, इनफैक्ट अच्छे नहीं शानदार नतीजे थे, तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। आज अच्छे नतीजों पर केमकॉन स्पेशलिटी जैसा छोटा केमिकल स्टॉक भी 17-18% ऊपर है, और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स जिसके नंबर्स हमने पहले देखे वो भी शेयर आज पॉजिटिव टेरिटरी में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल गैलेक्सी की बात करें तो यहां पर भी नतीजे काफी शानदार रहे। रेवेन्यू में 40% तक का इजाफा देखने को मिला, ये करीब करीब 1160 करोड़ पर आया। मुनाफे में 28% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और क्लियर कट इन नंबर्स में एक रिफ्लेक्शन है कि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल डिमांड भी पिकअप करती हुई दिखाई दे रही है। अब ग्राउंड पर स्थिति कितनी बेहतर होती दिखाई दे रही है, हमारे साथ इसी पर डिटेल में बातचीत करने के लिए गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के ईडी और सीओओ के नटराजन है। मिस्टर नटराजन, बहुत ही शानदार नतीजे हैं, और ये नतीजे दरअसल अच्छे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके टोटल वॉल्यूम्स थोड़े से फ्लैटिश रहे। नियरली दे वर डाउन 7.5%। सर्फैक्टेंट्स में वॉल्यूम भी 8% घटा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के आधार पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सो व्हाट हैज रियली हेल्प्ड? अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है तो ये नंबर्स में जो इजाफा आया है वो किस फैक्टर से आया? Thank you, Shukriya, for having me on this show. So there have been 2-3 reasons. One is the product mix that we have had, the way that we were able to generate a good set of products, the new products that we launched. The second is the way that we managed and the various challenges that got presented in a very, very smart way. And also in terms of how we leverage on certain opportunities that got presented in this quarter. So that essentially sums up the way that we work to deliver the good numbers that we have had. Okay, you're saying good product mix, उसका फायदा, लेकिन आपका EBITDA per ton मैं देख रही थी, that's also grown up really strong, nearly 37 to 40% growth. लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि लगातार आप लोगों ने बातचीत की है कि सप्लाई साइड के कुछ प्रेशर्स देखने को मिले हैं, आपके लिए इनपुट कॉस्ट भी अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ये जो ग्रोथ है क्या वो सस्टेनेबल है, या फिर आप सीधे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वो कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं तो मैनेज हो जाएगा? No, it's not that simple. Okay, so what I'd like to say is that we would like to guide to stick to the guided range of 16 to 18,000 per metric ton of EBITDA. Although we're confident that we'll be able to deliver at the higher end of this range. But what is important is that the volume degrowth that has happened, that needs to catch up, because that's going to be very important. So as we move forward, the way the mix can change, because performance surfactants, which is also a big portion of our portfolio, needs to start picking up its growth momentum. So as that happens, you will have a situation where the EBITDA per metric ton can get corrected. But yes, as we have said, we would wait for a secular trend on these lines to be established before we are able to guide the market on a higher band of the EBITDA per metric ton. So anticipating in terms of volume growth, this quarter volumes 8% कम हुए. Is there a likelihood of any pickup, or what range could it be in for the rest of the year? No, we certainly want the volumes to pick up, because that's what is going to ensure that the business grows very well. What is going to aid that is the commodity price inflation that has started correcting significantly. We only hope that sustains, and that essentially will enable our customers to pass on the price reductions to consumers, and then the consumers start coming back and start buying with the same amount of vigor that they were buying earlier. So we do hope, okay, that we are able to see this turnaround happening in terms of volumes, and we would desire that we are able to grow the volumes this year as well at the 6 to 8% guided range. Albeit we do see with this sort of degrowth that has happened in the first quarter, it's going to be an uphill climb. But yes, we would want to be at least at the lower end of the 6 to 8% guided range on the volume growth. Mr. Natarajan, exactly exports market ने इस बार कैसा किया? वहाँ कितनी ग्रोथ थी? वहाँ प्राइसिंग कितनी बेटर है इस वक्त? और
आगे के आई मीन एक क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए आपका आउटलुक क्या है? Export markets, if it is the major impact, the AMET market has degrown pretty significantly by almost 21%. And that's because the major market of Egypt and Turkey are fighting huge amount of inflation and currency devaluation. So that has impacted our volume significantly. And that would come up only when the consumers adjust to the new inflationary situation. So we do see that it will come back, but it will probably be gradual. With regard to rest of the world, in terms of our export markets, the volumes have come down by about 7%, but that's been majorly because of the energy crisis and the inflation scenario in Europe, and also in terms of certain volume degrowth because of recession that has started showing some signs in US. But this I hope that on the rest of the world side, we should be able to come back pretty much quicker than getting the volumes back to growth levels as far as AMET is concerned. Because there the problems are significant in terms of the inflation that's there and the currency devaluation that has happened. मिस्टर राजन, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा. आई मीन लास्ट 3 महीने से पूरे केमिकल स्पेस को फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव पूरे इन्वेस्टर लॉबी या ट्रेडर लॉबी जो है वो केमिकल स्टॉक्स को चेस कर रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक जो कमोडिटी प्राइसेस श्रिंक हुए हैं उसको देखते हुए आपका जो कॉस्ट वेरिएबल है उसमें कितना बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें रिडक्शन आया है, और अगर यही ट्रेंड रहा तो इसका एग्जैक्टली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट क्या होगा? पिछले 3 महीने में कॉस्ट फैक्टर्स कितने रेशनलाइज हुए हैं, कितना कम हुआ है? If you see palm kernel prices, oil price, which is the major feedstock as far as oleochemicals are concerned, has come down in the last 45 days by about close to 40%, 40-50%. So what we do see is that this will come back, but yes, in terms of it reducing in our last quarter numbers, it obviously is not is more tempered because it started coming down only from the middle of the last quarter. But moving forward, we do see that the prices can, if this trend continues, that it can result in it coming back to the levels that we saw, last year beginning. And that would enable us to be able to serve the consumer demand well, because the consumer demand would start getting more robust with the reduced prices that will get passed down to them. Mr. Natarajan, pleasure speaking to you. All the very best for the coming quarters. तो बेसिकली वॉल्यूम उसमें पिकअप आना अभी भी बाकी है और कंपनी गाइड कर रही है, उम्मीद है उनको कि 6 से 8% तक के दायरे